Good morning, good morning, good morning. Hello, champs. Every one of you are doing good, beta. So today we are going to start with inventory valuation. But before starting inventory valuation, first we will quickly revise our basic rules of accounts. तो basic rules of accounts को जल्दी से याद करते हैं. चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ recall करो. First rule of accounts. So accounts are divided in two parts. One is personal, second one is one is traditional approach, second one is modern approach. Traditional approach क्या बताता है? Traditional approach talks about personal, real, nominal. Personal account, debit the debtor, credit the creditor. Debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, paid all incomes and gains. Then modern approach, asset debit balance, liability credit, capital credit, expenditure debit, income credit. Okay. So we have finished with the basic rules of accounts. After that, beta, while passing any journal entry, you have to identify accounts, apply identify account, then identify type of account, then beta apply rule, and then pass journal entry. So for example, we are going to solve बेटा 5 journal entries. चलो जल्दी जल्दी 5 journal entries को recall करते हैं. सबसे पहले चलो today's first entry will be loan taken. Loan taken की entry क्या होगी? Loan taken is very simple sir. Cash और bank account debit to loan account. Cash कौन से type का account है? Cash is बेटा real account. Bank is a personal account. And loan is a personal account. Loan कौन सा account है? Loan is a personal account. So loan is our liability. Liability shows credit balance. So entry will be debit what comes in, cash comes in, and loan is our creditor. Okay, credit the creditor. So entry will be cash account debit to loan. चलो prepaid expense is our asset. Expenses of the current year we paid it in the expenses of next year we paid it in the current year. So beta this is expenses of next year. So entry will be prepaid expenses account debit to expenses. Revision चल रही है, थोड़ी सी fast रहेगी. So now you are very comfortable. How many of you are very comfortable with beta basics rules of account? चलो जल्दी से मुझे बता दे दो कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे जो अभी बहुत कंफर्टेबल है फॉर यूर रेगुलरली basic rules of accounts. I don't think basic rules of accounts में now you have any problem. So second one चलो after that bad debts. So bad debts की third entry is bad debts. तो bad debts की entry क्या होगी? Bad debts to debtors account sir. Bad debts account debit to debtors account. Next one बैड डेट्स टू डेटर्स के बाद सर बैड डेट्स रिकवर्ड भी बता दो. बैड डेट्स रिकवर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. एंड बेटा नेक्स्ट एंट्री चेक डिसऑनर हुआ तो डेटर्स विल गेट डेबिटेड. डेटर्स जिंदा हो जाएगा. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके सर, यस सर, वी रिवाइज ऑल दीज एंट्रीज. चलो जल्दी से कुछ लेजर के प्रोफॉर्मास याद कर लेते. लेजर के प्रोफॉर्मास याद करो. चलो एक्सपेंसेस છે તો ડેબિટ છે. ડેબિટ છે તો ડેબિટ પ્લસ ક્રેડિટ માઇનસ. ડેબિટ પ્લસ ક્રેડિટ માइनस में टू बैंक. यस. देन बेटा टू पेबल बाय प्रीपेड. पेन बदल दू. बाय प्रीपेड by P&L to prepaid on the first line and by payable on the first line. Last year का. Yes sir. सर प्रीवियस बैच के लेक्चर्स देख लो क्या? देख लीजिए बेटा, जल्दी कंप्लीट करना है तो देख लीजिए. बट इफ यू थिंक यू हैव टू आंसर, मुझे आंसर्स देने हैं तो बेटा उस केस में आपको डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे. रिमेंबर, सो लाइव लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू अटेंड इट इन बेटा लाइव सेशंस इफ यू वांट टू आंसर इट. चलो इनकम इज बेटा to receivable by received in advance to received in advance by cash to P&L. करेक्ट है. देन बेटा डेटर्स अकाउंट डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस. तो डेटर्स में क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू सेल्स बाय कैश बाय सेल्स रिटर्न बाय बैड डेट्स बाय डिस्काउंट अलाउड टू बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. एकदम सिंपल. क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट प्लस बाय परचेसेस टू कैश टू परचेस रिटर्न टू डेफिशिएंसी टू और क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड टू बिल्स पेबल एंड बाय बिल्स पेबल डिसऑनर एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन एट द एंड. ओके सर, ये भी समझ में आया. देन फिक्स एसेट डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस. डेबिट प्लस में क्या होगा? डेबिट प्लस में याद करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू कैश बाय एक्यूमुलेटेड depreciation by cash by loss to profit by balance carried down. And what is provision for doubtful debts sir? चलो आज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का प्रोफॉर्मा. यस, यू आर गोइंग टू टेल मी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का प्रोफॉर्मा. चलो जल्दी से बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का प्रोफॉर्मा. यस, live sessions are more interesting sir. Very good. Venkat Lakshmi, she is very intelligent student.
हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ 1 मंथ ऐसे क्लास, आज 1 महीना कंप्लीट हुआ, वेरी गुड। सुप्रभात जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम कंफर्टेबल, ओके। सलोनी एंट्रीज बता रही है, यस 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 यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जल्दी जल्दी बताओ। कैमरा ब्लर है सर, कहां से बेटा? आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है साना जी। मुझे तो नहीं लगता बेटा आज कैमरा ब्लर है, चलो चेक करता हूं। चलो सर, टुडे न्यू टॉपिक, सर टुडे न्यू टॉपिक, एवरीवन हैज टू अटेंड इट, न्यू चैप्टर, फ्रेश एनर्जी से, ओके। नो वन इज गोइंग टू बेटा अटेंड इट इन recorded one. If you have problem, then only go for recorded. Yes. By balance brought down, अपूर्वा ने सबसे पहले आंसर दिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू डेटर्स, यस आज पहली बार WROR विनर्स, फर्स्ट टाइम। टू डेटर्स एंड बाय P&L, सबसे तेज आंसर दिया WRO वालों ने। हेलो अकीब, हेलो साक्षी। कैमरा ब्लर क्यों लग रहा है बेटा तुझे? साक्षी नहीं है बेटा कैमरा ब्लर, ओके। So buy balance brought down, credit plus, debit minus. But whenever you are starting, you don't start Nidhi. Nidhi starting, you have to first identify. Okay, chalo. So we have quickly revised all these pro formas, ledger entries. Now we are going to start with very interesting chapter, which is called as inventories. Now this is a 4th chapter of your syllabus. कौन सा चैप्टर है बेटा ये? 4th चैप्टर। क्विज नहीं चालू सक्षम अभी तक? सक्षम, यस। चलो सभी बेस्ट है बेटा। प्रतीक्षा, WRO ने फर्स्ट टाइम आंसर दिया। वीडियो क्वालिटी लो नहीं है, अब्बास को भी लग रहा है क्वालिटी में इशू है क्या? चेक करो एक बार, विनो एक बार चेक कर। ओके, if you have problem beta of video, then you have internet issue, and suppose if you are not getting good quality, your YouTube वीडियो का जो रिजोल्यूशन है, डू इट बेटा 720 पे रखो, सो यू विल गेट गुड क्वालिटी। यस, हाँ जी, क्या विनो? अच्छा 1080 इज गुड, ठीक है, फिक्स है। चलो, yes, now we'll start with our inventory chapter. So why this chapter in our syllabus? So first chapter, remember, that is a theoretical framework था पूरा का पूरा। second chapter बेटा, second chapter is, you remember second chapter में journal, ledger, trial balance, subsidiary, then we have seen cash book, and then beta rectification of errors. So all important chapters to prepare your financial statements. This is a base point. जर्नल, जर्नल से जाएगा लेजर, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनेगा कैश बुक और सब्सिडरी बुक। सो नहीं, ट्रायल बैलेंस है नहीं, दीज आर options for journal, okay, options for journal entries. And then last chapter, when we made mistake in the current year or in the next year, it will be rectification. So we will beta rectify our mistakes, so we have rectification. So that was the logic of second chapter. Now third chapter, whenever there is a difference between cash book ka bank column and bank ka passbook, so cash book and bank passbook ka balance, why there is a difference, and that difference you have to identify why there is a difference, and that difference you have to identify, which is called as DRS. And today we are going to learn a new chapter which is called as inventory valuation. Inventory. So why these chapters are in our syllabus? Okay, आज हमें सीखना है कि ये चैप्टर क्यों है।
So S2, S2, accounting standard 2 is for inventory. Sir, while buying inventory, when you purchase any raw material, now first identify the words. Suppose if you are a manufacturer, sir, manufacturer, take one example. Manufacturer, suppose I'm a manufacturer of, assume I'm a manufacturer of pens. Ekdam simple. I'm a manufacturer of pens. Sir, what I need? I need plastic. I need ink. I need refill ka material. That nib I need. Okay. So this is a raw material for me. Okay. If I'm manufacturer of beta shirts, so what is cotton is my raw material. Okay. Then raw material gets converted into finished goods. So I have two types of inventory. This is called as इन्वेंटरी. इन्वेंटरी हिंदी में इसको बोला जाएगा बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे? सामग्री जो आपके पास रहने वाली है. यस, तो इन्वेंटरी का मतलब क्या होगा हिंदी में? रॉ मटेरियल, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे बेटा? कच्चा माल. एंड फिनिश गुड जिसको आप बेचते हो. एकदम सिंपल. ओके. सो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल. बेटा, now assume one very simple thing I'm telling you, very simple word. Suppose if you want to prepare Maggie, okay, at home you want to do Maggie. Now tell me, we want to do beta only one Maggie, but we have to purchase one Maggie, मतलब वो एक piece, one piece of Maggie. Yes, now you should be your health conscious होने चाहिए. So health conscious के लिए only one Maggie piece. और एक इसमें कितना आता है बेटा? एक इसमें I think 4 pieces are there. Okay, one Maggie pack, you have 4 pieces. So you consume only one. You bought 4 pieces at rupees. Assume you bought it at 40 rupees. 40 rupees की मैगी आती है. Yes. तो 40 rupees की मैगी, assume आपने 4 pieces लिए और out of that you बेटा made only one piece. So your valuation, so your closing stock is of 3 pieces. And that valuation, we will call it as, better that valuation, we will call it as raw material ka valuation. Okay, so it is very simple. So 30 rupees is the valuation. I bought it at 40. I consumed one piece and I left with better 3 pieces. So that 30 rupees is the valuation. Nothing wrong in that. Yes, it's very simple. I know. What do you consider? You consider purchase price. एक बार हिंदी में बताता हूँ, ध्यान दीजिए. देखो, आपने मैगी लिया. मैगी में कितने पीसेस थे? 4 पीसेस. 4 पीसेस में से आपने कितना मैगी खाया? एक पीस आपने खाया. सो 10 रुपीज का आपने कंज्यूम किया. 10 रुपीज का आपने कंज्यूम किया. यू लेफ्ट विथ 3 मैगी पीसेस. तो ये 3 मैगीज का वैल्यूएशन विल बी ₹30. इट्स वेरी सिंपल सर. Okay, now question. So why there is a chapter need? No, sir, we do not have this chapter in this our syllabus. It's so simple. I calculated it. It's very simple. 40 rupees divided by 4 pieces multiplied by 1 piece. 10 rupees I consume. 30 pieces I remained. Okay, but now try to understand. But Maggie is very basic example. Suppose if example, now let's move to next example. Suppose, yes, beta. अभी ध्यान दीजिए. देखिए एक एग्जाम्पल. सपोज आई बॉट रॉ मटेरियल. assume I need that. Suppose same example, I am a manufacturer of pens. Okay, pens manufacturing है. And I bought plastic. I bought plastic from, एग्जाम्पल में लेता हूं, फ्रॉम assume झारखंड से प्लास्टिक लाया. एग्जाम्पल है रे. नाउ आई एम इन पुणे. ओके, और हमारा आया माल रांची से. चलो, धोनी की सिटी. ओके, सो धोनी भाई के सिटी से, यस, आई कॉल सम प्लास्टिक. ठीक है. अभी रांची से जब मेरे पास प्लास्टिक आया,
So that cost, that traveling cost, okay, which is called as freight, should I consider that cost in my inventory or should I not consider that cost in my inventory? This is also cost. इट्स नॉट लाइक मैगी कि नीचे गया और लेके आया, ऐसा तो नहीं होगा। चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैगी लाया, सर इसमें क्या कॉस्ट है? नाउ रॉ मटेरियल यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। नाउ व्हाट अबाउट दैट कॉस्ट? यस, वो क्या फ्री में देने वाला है क्या? नहीं, रांची से पुणे आने वाला है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यू हैव टू पे, but obvious. So that transportation cost, what you are going to consider, yes, we have to understand in this chapter remaining cost that you will consider while doing inventory valuation. So ये chapter हमें क्या सिखाता है? ये chapter हमें सिखाता है which cost you should consider and which cost you should exclude while doing inventory valuation. Now you understood the logic of this chapter. Whenever you are starting with any chapter, you ask to yourself why this chapter is introduced by ICI in our syllabus. ICI ने ये chapter हमारे syllabus में क्यों लाया? तो very simple reason, you will understand when while doing inventory valuation, which cost has to be considered, which cost has to be excluded, that we have to understand from this chapter. So first point, we understood what is inventory, what we are going to learn. So write down somewhere मतलब ये चैप्टर का ओवरव्यू है भाई, यू ऑलरेडी अवेयर, ये आईसीआई लिख के देती है व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. सो देखो हमारे आईसीआई ने, डियर आईसीआई जी, आपने तो पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है. देखो ओवरव्यू में सब कुछ लिखा हुआ रहता है. व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी chapter of any subject, first you ask to yourself why we have to learn this chapter, sir. So yes, first thing I understood, मुझे चैप्टर क्यों सीखना है. अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ इन्वेंटरी. इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी क्या होता है? ओके, सो इन्वेंटरी मतलब इट्स अ, सर आई अंडरस्टूड इट नाउ, रॉ मटेरियल एंड सेकंड वन इज फिनिश गुड्स. सर रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड्स भी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, today we are going to understand why this chapter, yes, what we have to consider, what is inventory. चलो inventory तो समझ में आया. Now second thing, sir, whenever inventory is unfinished, it is in unfinished stage, it is not finished goods. When beta it is in unfinished stage, for example, raw material I bought plastic and all, and now beta stickers चिपकाने बाकी है and inventory को नीब बिठाना बाकी है. Okay, so my inventory is not 100% produced. Okay, when raw material is 100% converted, it gets finished goods. Finished goods you will use for sale purpose. And semi-finished goods, semi-finish means 50% finish, 70% finish. When beta it is in the finishing stage, it is not finished, it is in finishing stage, 50% तैयार है. Okay, it is called as WIP, work in progress. What is called as work in progress? So work in progress मतलब क्या? Work in progress means whenever inventory is in, yes beta, semi-finished form. And raw material means you are buying it. Whatever you buy from the market directly, it is called as raw material. Chalo, 3 words you have to understand. Raw material, so it is for manufacturer. ये किसके लिए इन्वेंटरी है? It is for manufacturer. Sir, who is trader? Trader मतलब कौन? जो buy and sell they are doing. They are not manufacturing anything. So they do not buy raw material. They directly buy finished goods, traded goods. They have only one type of inventory, which is for them, it is finished goods. They are not going to process on that goods. They are not going to do any processing. Processing कौन करता है? Manufacturer. So manufacturer has 3 types of inventory: raw material, semi-finished goods, and finished goods. And manufacturer के अलावा ट्रेडर के लिए he has only one type of product, that is traded goods.
नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी. यस, सो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना टाइप्स है बेटा? हाँ, मैन्युफैक्चरर के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरर दे हैव 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी. WIP means work in progress. Yes. Understood? चलो सर, आप सर ठीक से समझ नहीं आया. दिव्यांशी क्या नहीं समझे बेटा इसमें? देख बेटा, रॉ मटेरियल एक बार हिंदी में बताता हूँ. ठीक है, अभी मैंने पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट्स हैव रिवीजन इन हिंदी. बेटा देख बेटा, मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ कौन हूँ? पेन्स हूँ. मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ. तो मेरे लिए क्या होगा दिव्यांशी? मैं क्या लेके आऊंगा? मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा. मैं पेन बेचना नहीं हूं, मैं पेन तैयार करके बेचता हूं. और तू पेन बेचने वाली है. 2 टाइप के लोग हैं. तू डायरेक्ट पेन लेती है और बेचती है, तो यू आर ट्रेडर. तू कौन है बेटा दिव्यांशी? यू आर अ ट्रेडर. मैं कौन हूं? मैं पेन बनाता हूं. आई एम मैन्युफैक्चरर. मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा. मेरे पास रॉ मटेरियल मतलब क्या होगा? वही रे बेटा, प्लास्टिक है, नीब है, एग्जाम आपका बाकी के जो चीजें, इंक है. तो वो क्या होगा बेटा? दैट इज अ मैन्युफैक्चरर. वो मैन्युफैक्चरर है. सॉरी, मैं मैन्युफैक्चर, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल होगा. कुछ पेन बेटा आधे अधूरे हैं, जिनकी स्टोरी पूरी नहीं बन चुकी है. तो ये क्या होगा बेटा? WIP. जो 100% स्टोरी नहीं बनी है वो है WIP. तो बेटा WIP मतलब क्या? जो आधा अधूरा है. सो आधा अधूरा जो होगा वो WIP. एकदम सिंपल है. एंड फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स मतलब जिनकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है. फिनिश गुड मतलब पूरा पेन तैयार है. जब आधा अधूरा पेन होगा तो WIP बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस. जब रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा है बेटा, वो उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल. और जो पक्का हो जाएगा तब उसको बोलेंगे फिनिश गुड्स. इतना सिंपल है, हिंदी में भी बता दिया. और ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है बेटा? ट्रेडर मतलब क्या करेगा? पेन लेगा, पेन बेचेगा. अभी इसको क्या बोलने का बेटा? ट्रेडर पेन लेगा, पेन बेचेगा, तो उसके लिए इन्वेंट्री सिर्फ एक टाइप की इन्वेंट्री होगी. उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडेड गुड्स. तो यही तो ICA ने लिख के दिया हुआ है. इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग. मैन्युफैक्चरर क्या करता है और ये अपना ट्रेडर क्या करता है. इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस पता होना चाहिए क्या? तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या इन्वेंट्री होगी? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ. मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री क्या क्या होगी? यस, फॉर मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री इज क्या क्या होगी? इन्वेंट्री चलो बताओ जल्दी जल्दी. 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री फॉर मैन्युफैक्चरर: रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स. इज इट वेरी डिफिकल्ट? हाँ जी बेटा, इतना डिफिकल्ट है क्या? कोई भी कर लेगा इन्वेंट्री चैप्टर तो. अनीश अनीश को क्या हो गया बेटा आज? संकेत सर फॉर एवर करके भेज रहा है. बहुत बढ़िया बेटा. रॉ मटेरियल होगा, WIP होगा, फिनिश गुड्स होगा. वेरी गुड. एंड फॉर ट्रेडर इट इज ओनली ट्रेडेड गुड्स. यस यस यस, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन. ठीक है. चलिए, सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी वी हैव फिनिश विद. चलो चलो चलो, PPT लाते हैं. एकदम मजाक में PPT लेके आते हैं. चलो अभी हम लोग जाएंगे PPT के लिए. Sir, would inventory be explained in notes to account? No, beta. It will be present in the balance sheet, and we give bifurcation. Inventory total will be given, and in notes to account, what we have to write, that also I will tell you. And in balance sheet, what we are going to present, that also I am going to tell you. Don't worry. So, how it is presented in the financial statements? Let's first calculate it. First calculate it. Okay. Chalo. Now, I am giving you second example for importance of this chapter. Importance of this chapter. Okay. Yes. Now we are going to do some magic. Okay. मैजिक करने वाले हम लोग. मैजिक में मेरे पास आई वांट हाँ चलो. यस, कुछ तो लेके आता हूं मैं. यस. नाही, पेज पेज ब्लँक पेज एकच आहे. अजून एक वन मोर पेज. ठीक आहे.
ब्लैंक पाहिजे ना, ठीक आहे देत का. अच्छा. Now beta, yes, why I want to show you, wait, these are two blank pages. Okay, see blank pages. Okay, now what happened? This page, I bought it for 1 rupee. One page, rupee 1. And suddenly, beta, prices hikes. So one page I got for rupees 1.5. I bought two pages, one at 1 rupee. This is at 1 rupee. This is at 1.5. Okay. Now, I have not written any amount on this page. 1 rupee, 1.5. No. Abhi kya hua? Abhi I exchange this. So this inventory gets mixed with each other. Okay. And now tell me, this page is of 1 rupee or 1.5 rupee, or this is 1 rupee or this is 1.5. I don't know. Because this is interchangeable inventory. This is interchangeable inventory. ये एक दूसरे में मिक्स होने के बाद you won't calculate कि one page is either 1 rupee का and 1.5 का. Now you used one page. So you left with one page, beta. Now, sir, should I record this one page at 1 rupee or 1.5 rupee? I don't know, because inventory gets mixed. I have not given any tag on the page. So inventory gets mixed. I don't have any tagging. उसके ऊपर tag नहीं था, ये 1 वाला है या 1.5 वाला है. And mix होने के बाद, now I am confused. Should I record that inventory at 1 rupee? If I record it at 1 rupee, my closing stock will be shown at 1 rupee. And if I record it at 1.5, my closing stock will be 1.5. One page into 1.5. Sir, my profit will get changed. Closing stock valuation will get changed. And if closing stock changes, your valuation is going to affect. Your profit will get affected. So it's very difficult when inventory gets mixed and having different prices, same article, same raw material, but having different prices. And this chapter will teach us this type of inventory valuation also. So ICI, जब भी आपको confusion in accounting, ICI is with you. ICI introduce accounting standard. Accounting standard 2. If you have such type of inventory, then how to record it for? Now this is a practical difficulty, sir. And whenever there is a practical difficulty, whenever different accounting is there, whenever there are two different opinions, ICI will come into the picture. And Hamari dear institute will give you accounting standard for this. And therefore, we have to learn this chapter when there is beta similar inventory and which you are going to exchange. ओके, इंटरचेंजेबल. एक बार हिंदी में समझ लो. देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन समझ में आना. इन्वेंटरी वैल्यूएशन में क्या हुआ? सर ने एक पेज लिया 1 रुपए से, एक पेज लिया 1.5 रुपए से. आबड़ा किया, दोनों पेज मिक्स हो गए. उसके बाद सर ने क्या किया? उसमें से एक पेज कौन से रुपए का था, सर को भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं ध्यान में आ रहा है 1 का है या 1.5 का है. इफ आई रिकॉर्डेड बाय, मैंने 1 रुपए से रिकॉर्ड किया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपया दिखेगा. यदि मैंने 1.5 रुपए से रिकॉर्ड किया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1.5 रुपए से दिखेगा. फिर मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा. क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा. तो ये चीज बचने के लिए कि कितने पे रिकॉर्ड करना है, इसीलिए हमारी आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आप लोगों को एक स्टैंडर्ड दिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंटरी वैल्यूएशन. और वही तो हमें पढ़ना ये चैप्टर में. So now I understood why we want to learn this chapter.
Now everything is very clear. Or one time. And last point. So ये पॉइंट भी समझ में आया, ये पॉइंट भी समझ में आया. I understood first time inventory, which type of inventory, what to be included, what to be excluded. That is in inventory. Second, when goods are beta interchangeable, then how to record it for? When you are buying same inventory at different prices. Okay, so I understood that also. And third point now I want to understand, sir, I am a small retailer. I am a small retailer. Okay. And if I want to keep books of accounts, it's very difficult. Do you have any other technique for retailers like us if we don't maintain inventory in proper books of accounts? Then whether there is shortcut, because hardly there is a question of 50-100 rupees if inventory is stolen by employee or if we forget to record it. But should I record that? Inventory valuation is not possible. I am a trader of beta, assume करो मैं एक retailer हूँ, गोलियां chocolate maintain करने वाला. I am selling only chocolates. Is it possible for me to record each and every time one chocolate I sold, one chocolate I bought, 10 chocolates I bought, one chocolate I sold? It's not possible, sir. अरे गया ना, 1 रुपए का खाएगा यार, ठीक है खा ले चॉकलेट. तो इन्वेंटरी कौन, मैं क्या अकाउंटिंग करते बैठो, 10 चॉकलेट आए, 2 आए, चलो 2 खाए, ऊपर से 8 बचे, वापस 5 चॉकलेट आए, 3 चॉकलेट खाए. अरे इतना ही कर रहा हूँ क्या, बिजनेस कर रहा हूँ या चॉकलेट गोलियों का बिजनेस है? एक तो छोटा बिजनेस, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है. हाँ, तो एक याद रखो, पर ये इन्वेंटरी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो फॉर दिस, yes, I have another technique, inventory record keeping. For whom? For manufacturer, for wholesaler, for trader. You have to identify if you are a small trader, so you have different technique of recording inventory. And if you are a manufacturer, so you have different technique of maintaining inventory, maintaining how to record it. So this chapter will teach us how to record. Yes, I got the concept. I got the concept, sir. It's very simple. So this chapter will tell us types of inventory. Yes. Okay? Types of inventory. Then second one, when goods are interchangeable, when they mixed with each other, then how to record it for. And last one, how to keep inventory recording system. Weightage of this chapter, 4 to 5 marks, 8 marks, 12 marks, but mandatory question on inventory, compulsory question on inventory in your exam. Yes. Any other question? Any other question? So now you understood why this chapter, every one of you. चलो, स्नेहा गुप्ता बोल रही है, बेस्ट टीचिंग रियली, थैंक यू बेटा. Whichever is more. अनीशा बोल रही है सर क्विज. अरे बेटा रुकना, क्विज क्या अभी तो स्टार्ट नहीं किया क्विज. इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल. राइट वाला एक ने बता दिया. जयंत भाई पूछ रहे हैं आर यू गुजराती? ओके, हाँ बेटा. लिखित पूछ रहा है व्हाट इज वेटेज. वेटेज से क्या लेना देना है? ठीक है, बता दिया. आब्राकडाब्रा इज गोइंग टू हैपन. ओके. व्हाट इज लूज टूल्स? वेट वेट वेट, बताऊंगा बेटा. चलो, अंडरस्टूड टिल नाउ एकदम परफेक्टली? Yes. Are you enjoying inventory chapter? Because many students, they are thinking, inventory and depreciation chapter. They normally students think these chapters are very difficult one. Believe me, it's very simple. And you will get 100% marks in this chapter. Inventory is nothing better. Inventory is nothing. ठीक है? चलो. A Sakshi, TYK sums I have already given you in the homework, and TYK questions of BRS are not difficult at all.
I know all questions are Z category questions. So I'm not going to take that questions. You only know add less technique. You do it. Yes, 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 yes. Khushi, one thing you have to understand. Don't tell to yourself any chapter is difficult. कभी भी आप खुद से ये बात मत करिए कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है. Always remember, you must tell to yourself, everything is all is well. Okay, कि everything is easy. If you say ना कि ये chapter is difficult one, तो बेटा back of the mind while solving questions, you always think कि this chapter is difficult one. And believe me, after understanding the concept from Sanket sir, I don't think anything is difficult one. I tell you each and everything very logical. So I don't think any question is difficult for you. Ha, sometimes there are tricky adjustments, but that tricky adjustment we have to read it by write it by red pen, and we have to revise it on daily basis. So this is a simple solution to get everything very simple. And don't tell to yourself this is difficult and this is simple one. Everything is simple. ठीक है, ये याद रखना. क्योंकि क्या हुआ था, मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ. जब हमने 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव स्टार्ट किया, हमारी मैथ्स की फैकल्टी ने पहले हमें डरा के रखा कि भाई डेरिवेटिव इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट है सर. तो डेरिवेटिव मतलब बच्चों को ऐसा पहले डेरिवेटिव्स है डेरिवेटिव के रखा. अभी उन्होंने ये बताया तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या हो गया कि प्रॉब्लम शुरू करने के पहले हमारे मन में डर था कि दिस इज डिफिकल्ट. संकेत सर कभी बोलते क्या ये चैप्टर डिफिकल्ट है? हाँ, ये बोल सकते हैं संकेत सर कि दिस चैप्टर हैज ट्रिकी एडजस्टमेंट, पर चैप्टर इज नेवर डिफिकल्ट वंस यू गो लॉजिकली. ओके, ओके, चलो नेक्स्ट. अरबाज, inventories. Let's understand. Meaning of inventory, direct or indirect expenses. I will tell you what to write it in 100 pages book. So take screenshots. तो screenshot लेना and write it in 100 pages book today itself. ठीक है? Okay. चलो. Meaning of inventory. Let's understand. Meaning of inventory. No one will leave class up to 1:30. CA students के patience. Today I want to see full attendance. Meaning of inventory. Let's understand. Inventory. Inventory for manufacturer and for trader. For manufacturer, it is raw material. See, raw material. Please वो डायग्राम्स को देखो. रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल डायग्राम्स भी आपको याद करवाते हैं मेरे पीपीटी में. पूरा पीपीटी दिमाग में बिठा दो. रॉ मटेरियल देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है. यस, WIP which is in work in progress, अभी तैयार हो रहा है. So they are doing better work on that. Labor are also working on that. That is work in progress. And finished goods. Now that labor is very happy. It is in ready position. So 3 finished goods. So work in progress, raw material and finished goods, which is used in the production or consumption. Raw material you are going to consume. आप raw material को consume करने वाले. Consume. Yes, we will consume it. We are not selling it. WIP means which is in semi-finished goods. Conversion process, which is going to convert into finished goods. It is semi-finished. In simple language, semi-finished. Remember, this will be transferred. Now you will understand this chapter
इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ओके, सो रॉ मटेरियल एंड WIP इज यू टू रिकॉर्ड इट इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. कहां पे रिकॉर्ड करोगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? यू हैव अ सेपरेट चैप्टर. Don't worry. But raw material and WIP, you will record it in the manufacturing account, and finished goods, you are going for sale it. And what is the meaning of finished goods? Raw material, add wages, add direct expenses, and add factory overheads. Now, what is overhead? Overhead means indirect expenses. Overhead means indirect expenses. Sir, give example. Light bill of that factory. You are not incurring in one product, not on that pen. It is for overall factory. It is called as indirect expenses. Direct means directly attributable to that product. For example, if I am a manufacturer of shirt, this button, ये button is a direct expense. Either you consider it as a raw material. This thread, ये जो दोरा है ना इसके अंदर का, ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बट प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच दिस शर्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, उसका डेप्रिसिएशन ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी वेयर दिस शर्ट्स गॉट मैन्युफैक्चर्ड, it is called as overheads. It is called as overhead. Overhead means indirect expense. So new word for you. Overhead means not on specific, product. These three are directly related to product. And this is called as period cost. There are two costs. One is product cost and one is period cost. Sir, at intermediate level in costing, I will teach you product cost versus period cost. Product cost means क्या? Product cost मतलब directly related to product. And period cost is not identifiable with the product, but it is for overall products. The rent is not for one product. Rent of that premises is indirect expenses. Now, can you give me example of direct versus indirect? Now, you only tell me some example of direct, some example of indirect. I'm waiting for you. Apply logic. Logic apply karo. Okay. ठीक है, चलो 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 बताओ. अरे बताओ मेरे दोस्तों. यस बेटा, पैकिंग भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी. यस वैभव, प्लीज बैच चालू हुई है ओनली, तो सिलेबस 1 ही महीना हुआ है. ये क्यों दिमाग में रहता है? व्हेन यू आर इन द लर्निंग फेज, यू ऑलरेडी कवर्ड 30% ऑफ योर सिलेबस. आउट ऑफ 10 वी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स. 30% इन 1 मंथ ओवर, 30% नेक्स्ट मंथ में ओवर होगा, नेक्स्ट 40% नेक्स्ट मंथ में. 3 मंथ्स की बैच है. I really don't understand why students are in hurry कि पहले syllabus. First, try to understand concepts. No, beta. Direct expense, salary, we can't call it as direct expense. Wages are direct expense. Wages means who are manufacturing these goods. Wages is directly related to goods. Salary for, not, they're not working. Salary किसकी होती है? Officers. Factory manager, supervisor. Who is supervisor? His salary is beta indirect expense. So his salary will be indirect expense. He's not directly related to the product. He's not working on product. He's supervisor. Accountant salary is also indirect expenses. So that's why wages is considered in trading account and salary is considered in the P&L account. Wages is directly related to the product. And salary is not directly related to the product. So, beta, indirect expenses
You can write it on question. Study material. Right over there. See, direct and indirect. Direct and indirect. Expenses are divided in direct and indirect. So write down on question your study material first page. Otherwise 100 pages के book में लिखो. First thing, direct raw material, wages, direct expenses. Final accounts में I'm going to teach you these things. Don't worry. Final account में we have a separate chapter, final accounts, but we need reference over here. Indirect expense is overheads. चलो, recall it. Indirect expenses is overhead. Indirect expense को बोलेंगे overheads. Overhead को first overhead is factory overhead. कौन सा ओवरहेड है? पहला फैक्ट्री. फैक्ट्री का ही दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. मनु मैन्युफैक्चरिंग. Manu means manufacturing. I won't take full name. Next time only Manu overheads. Manu means manufacturing. Work overheads. इसी का तीसरा नाम है work overhead. Manufacturing, factory, work, production overheads. Fourth name, production overheads. Okay, very simple. Overhead के different names. Second one, second overhead is administration or office overheads or general overheads. General overheads. And third one, selling and distribution overheads. So, whatever expenditure you will incur, you have to put it in 6 categories. Either it is raw material, या wages, या direct expense, या factory overhead, or administration overhead, and selling and distribution overhead. चलो, 5 times you have to recall these 6 expenditure. Number 1, चलो मेरे साथ जोर जोर से बोलो. Speak loudly at home. Raw material, wages मतलब ही labor. Wages मतलब ही labor. You can call it as labor cost. Raw material, wages or labor, direct expenses, direct, indirect, overheads, factory overhead, work overhead, manufacturing overhead, production overhead. Second one, administration overhead or general overhead. Third one, selling and distribution overhead. वापस, expenses, direct, indirect. Direct में raw material, wages, direct expenses, indirect expenses, factory overhead, manufacturing overhead, work overhead, production overhead. Second one, administration, office, general. Last one, selling and distribution. अभी one ने direct में raw material, direct labor, direct expense. Overheads, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. खत्म. वापस direct, third time हुआ. Direct, raw material, wages or labor cost, direct expense, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. Raw material, direct labor, last time, direct expenses, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. Very good. Recall हो गया? Yes, everyone clear with the expenses? How many expenses are there, beta? Expenses, 6 expenses है. Okay. राज बेटा इसमें क्या डिफिकल्टी है? Any expenditure बेटा? Any expenditure. We have divided in 6 expenditure. Any cost, we will divide it in this 6 expenditure. Sir, why this is important in inventory valuation? So inventory valuation में you won't consider full expenditure. You won't consider full expenditure. ठीक है? याद हो गया पूरा? इजी है.
in inventory valuation, we are not going to consider full expenditure. Sir, please give me example. चलो एग्जाम्पल ले लीजिए. Try to understand the example. सर फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है? देखो भाई, जो सुपरवाइजर होता है या जो प्लांट एंड मशीनरी है जिसके ऊपर काम हो रहा है, एग्जाम्पल देता हूं इधर. सुपरवाइजर की सैलरी या डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. Depreciation of plant and machinery. It is factory overheads. Supervisor is not directly working on product. He is controlling your labor. He is a supervisor. He is watching quality of the product. So it's not directly related to the product. His salary is indirectly related to the product. Okay. Administration overheads. Sir, accountant की salary. Accountant in this organization, he is not directly related to production. He is related to administration. HR की salary. Administration department. Building, factory building nahi, office building, where other employees are sitting, not your laborers. If labor की factory building होगी, building of labor, factory building. Factory building. Factory building is different. Factory building where workers are sitting. And suppose if employees are sitting, better then this is office building. So office building will be covered under office building ka depreciation here and factory building ka depreciation in factory overheads. So factory related overheads are different. Salesman salary, warehouses. Warehouse means distribution. So warehouse keeper ki salary will be covered here, selling and distribution. So this is how you have to divide your, it is your expenditure, but expenditure has to be divided category wise. Why categories are important? You will understand within 10 minutes. Why we have to put all these figures in different categories. Sir, all are expenditure, but you have to divide it. You have to divide it. All expenditure, you have to divide it in your cost centers. कॉस्ट सेंटर मतलब आपकी जो कॉस्ट इनकर करते हो वो बोला जाता है कॉस्ट सेंटर. ऑल दिस वर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड एट इंटरमीडिएट लेवल इन कॉस्टिंग. दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग and this you will need in final accounts also. So any expenditure you have to divide over 6 parts. तो आपको हर एक्सपेंडिचर को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. अभी समझ में आया कि आपको? Logically you are better done with this? Yes beta, Kailash, it is allowed. चलो, now I am giving you one example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. यस बेटा, चलो. मोहम्मद ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. सर फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग एक ही जगह पे होगा तो क्या करेंगे? बेटा स्क्वायर फीट वाइज डिवाइड करेंगे. फैक्ट्री की कितनी जगह है और ऑफिस की, और यही तो हमें कॉस्टिंग में सीखना है इंटरमीडिएट लेवल. वेरी गुड बेटा, गुड राज, सॉरी मोहम्मद, वेरी गुड थिंकिंग बेटा. यस, चलो. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा directly related, for example fuel need for your vehicle, same plant and machinery, so that will be considered as direct expenses. ठीक है. रॉयल्टी, अभी रॉयल्टी क्या होता है बाद में बताऊंगा. रॉयल्टी आई विल एक्सप्लेन यू एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट. एंजॉय करो रे स्टडी को. इट्स वेरी सिंपल वंस यू गॉट द लॉजिक.
So whatever expenditure incurred, you have to divide it over 6 parts. One is raw material, second one is wages. Wages के बाद direct expense, factory overhead, administration overhead and selling and distribution overhead. चलो अभी हम लोग निकलते हैं आगे. यस सुमित भाई, न्यू स्टूडेंट हो. हाँ अभी देखो, रॉ मटेरियल मैं एग्जांपल देता हूं. 1 लाख का रॉ मटेरियल है. ओके, गिव मी आंसर. वेजेस 50,000. नाउ क्विज टाइम. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000. फैक्ट्री ओवरहेड 2 lakhs. यस. फैक्ट्री लाइट बिल बेटा फैक्ट्री ओवरहेड. ऑफिस का लाइट बिल ऑफिस ओवरहेड 2 lakhs. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,50,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 50,000. Remember, yes, I produced 50,000 units and sold 40,000 units. Calculate closing stock value. Calculate closing stock value. Only one hint. Administration overhead and selling and distribution overhead are not considered. See, administration overhead and selling and distribution overhead are not considered while inventory valuation. Now, question is open to you. Now you can answer my question. तो आप लोगों को देखना है कितने प्रतिशत भारतीय इसका आंसर दे पाते हैं. चलो देखते हैं कितने प्रतिशत आप में से भी आंसर दे रहे हैं. फटाफट 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 बताइए कितने प्रतिशत लोग बता पा रहे हैं. चलो जल्दी से. यस. मेरा तो हो गया. आई डन. ओ माय गॉड, सबसे तेज आंसर दिया है दरविश ने और वो भी करेक्ट दिया है. वाह रे वाह मेरे दरविश, शेर है तू. वेरी गुड. मोहम्मद वेरी गुड बेटा. जानवी रॉन्ग. रितु आप तो सिर्फ यूनिट्स बता रहे हो. आई एम आस्किंग यू वैल्यू. आई एम नॉट आस्किंग यू यूनिट्स. मौर्या बेटा बहुत बढ़िया. मनीषा वेरी गुड. निकिता तो पूछ रहे क्वेश्चन क्या है सर. निकिता तो को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. निकिता क्वेश्चन क्या है. कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू. विदिशा रॉन्ग. मनीषा करेक्ट. नवीन करेक्ट. नवीन करेक्ट છે. देन पलक करेक्ट. श्रावणी wrong. Wrong. Yes. And the finally correct answer is उत्कर्ष ने करेक्ट दिया है. The correct answer is 80,000. How? It's very simple, Ray. How much is the cost? 1 lakh. Hey, क्या हुआ? 1 lakh. I will consider 50,000 also. Direct expense 50. Indirect expenses 2 lakhs. 150. No. Selling and distribution, no. So my cost is, I will consider 4 lakhs. My cost is 4 lakhs. For how many units? 50,000 units. This is a cost per unit. This is called as cost per unit. 8 rupees. And I sold 40,000. So left with 10,000 units. It's my closing stock. So 10,000 into
8 rupees. 80,000. सिंपल, इतना सिंपल था. बट स्टिल यू आर नॉट डेवलपिंग यूर थिंकिंग. आपका थिंकिंग लेवल डेवलप नहीं हो रहा है सर. ईशिका वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. मोहम्मद ने भी, चंदना जी करेक्ट आंसर 80,000. वेरी गुड बेटा चंदना. शेयर हो यार आप मेरे. दोज हु आंसर 80,000 ना बेटा, all of you are correct. And believe me, you are actually concentrating 100%. आपका concentration level 100% है. Yes. Those who are not answering, beta, अरे use logic. I produced 50,000 units. I sold 40,000 units. This is my production cost. And already I have given you hint. And this chapter talks about inventory valuation, how you are going to record your inventory. So I should record my inventory at 8 rupees, 10,000 units into 8. Such a simple question. Okay. Last time I'm asking you one question. So everyone, now I want clear answer. Production, 2 lakhs units. Everyone will answer correctly now. Sold, 1,60,000 units. Cost, material, labor, direct expense, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. See the answer. 3 lakhs, 5 lakhs, 7 lakh, 1 lakh, 8 lakhs, 10 lakhs. Yes, answer it now. Chalo. Who is giving fast answer? चलो देखते हैं. सबसे तेज कौन है भाई? ये सहना, रोशनी बोल रहे हैं मेरा आंसर चैट्स विजिबल है क्या? यस सर विजिबल है. रिफ्रेशमेंट बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट ना, सौरव एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉय कॉस्ट. I don't understand yaar why students are giving wrong answers. 3 plus 5, 8 plus 7, 15 plus 1, 16 lakhs. I won't consider these two. 16 lakhs. Beta, you are really CS students. Those who are giving wrong answers. 2 lakhs units you produce. 40,000 you left with. So correct answer is 3,20,000. Again 8 rupiah. Again, coincidentally, it is cost per unit 8 rupees. ये भी नहीं बता पाते हो यार आप लोग. 5 lakhs कहां से आता है रे दीपक? हाँ खुशी, 5 lakhs कहां से आया रे? 1,28,000. ये स्वाति. खुशी, एक अनदर खुशी इज गिविंग 1,28,000. कहां से आता है 1,28,000? लिखित. वन स्टूडेंट इज गिविंग, हर्षा दे रहा है आंसर 3 lakhs. लिखित दे रहा है आंसर 1,28,000. नहीं नहीं बस बेटा अभिषेक, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3,20,000 पूरा इंडिया आंसर दे रहा है. 80% स्टूडेंट्स आंसर इट करेक्टली. 80%. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू अदर स्टूडेंट्स. इतना इजी भी नहीं समझ में आता जल्दी से. टाइप करो यार आप लोग.
Give correct answer. Though you are giving wrong answer, doesn't matter. But at least, yes, beta, those who have given wrong answer, I am with you. Palli, Harshita. See, beta, these are very simple answers. Yes, those who made mistakes, tell me the reason in comment section. हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो. क्यों गलत दिया था आंसर, मुझे रीजन बताओ. नो, नॉट नो मोर एग्जांपल्स. जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है रे. चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट. I hope you understood it. So finished goods you will consider up to factory overhead. You won't consider administration overhead and selling and distribution overhead. This is your 100 pages के बुक में लिखना है. चलो, next one. For trader, it is only finished goods. अच्छा, अभी लो, sorry. Now take a screenshot. This is a proper screenshot. Your first answer, meaning of inventory. Please do your 100 pages notebook. हाँ बेटा, complete, finish your 100 pages notebook today itself. 100 pages के बुक में ये सबसे पहले लेना है. Those who are not maintaining 100 pages का बुक बेटा, लास्ट में बड़ा पछताओगे. ट्रेडिंग अकाउंट P&L में आएगा बेटा, बट वी कंसिडर इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है वो. आई विल टीच यू इट बाद में. एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. चलो, क्विक रिवीजन. रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस बेटा. फ्रेट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Yes. So expenses, you can take a screenshot. 100 pages book. Expenses low. Easy है. But Saurav, I will tell you in final accounts where to record all these expenses. Today, you just have to understand which expenses you have to consider and which expenses you don't have to consider while doing inventory valuation. Screenshot ले लिया. चलो आगे. Elements to be considered. Direct material, yes. Direct labor, yes. Direct expense, yes. फैक्ट्री ओवरहेड, ओ इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट. इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड, यस. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, नो. While doing inventory valuation. Now clear with the concept. Don't take this screenshot. You when you write beta, your second ये जो आपने लिखा था ना, second one, yes, 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 no, no.
इजी 6। यस, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकाला जाएगा? COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold, COGS. Now, first I will ask you one question. Question to you, all of you. Think on this. Opening stock 100 units. मेरे पास 100 यूनिट्स थे, 100 मैगीज थे. I bought 1000 units and I left with 200 units. Can you tell me कितने units I sold? How many units I sold? Tell me. चलो बताओ बताओ बताओ. बेटा खुशी, it's a rule. We do not consider administration overhead and selling expenses as per accounting standard 2 while doing inventory valuation. It is specifically given by the ICI. COGS का मीनिंग होता है बेटा थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Yes. So your answer is 900 units. Correct answer is opening stock plus purchases minus closing stock in units. This is as per units. So for manufacturer, while calculating COGS, opening stock of finished goods, he will consider value. Now we are calculating in rupees, not in units. Units होगा तो बहुत सिंपल है. Plus raw material consumed, plus direct wages, plus direct expense, plus factory overhead. Don't consider administration overhead. Add opening stock of WIP. So WIP भी है. Less closing stock of WIP. Less closing stock of finished goods. And then this is called as COGS. चलो याद करो 5 times. Opening stock of finished goods plus raw material consumed. Consumed, not purchase. Consume means opening plus raw material purchase minus closing of raw material. It's called as consumption. Opening, here calculated na beta. Opening plus purchase minus closing, it is consumption. Plus wages, plus direct expense, plus factory overhead, plus WIP, less closing WIP, less closing stock of finished goods. याद हो गया. Opening stock of finished goods, add raw material consumed, direct wages, direct expense, factory overheads, add किया, add opening WIP, less closing WIP, less closing finished goods. खत्म. ट्रेडर के लिए क्या होगा? Opening stock. He has only one opening stock. Plus purchase, not consumption. Not consumption here. He will purchase. Less plus wages, plus direct expense. He does not have factory. So does not have factory overhead. Minus closing stock, COGS. Yes. Take a screenshot. COGS in rupees. He does not have WIP. He does not have raw material. He have only finished goods or traded goods. Yes. COGS. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Easy है बेटा. Understood the concept? So हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं? Raw material, wages, direct expense, factory overheads, WIP, less closing WIP, less closing finished goods. याद रहेगा यार?
सीओजीएस, सीओजीएस मतलब क्या? ओपनिंग प्लस सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। COGS and sales are same? No. COGS is excluding profit. Good question. COGS plus profit is equal to sales. Next one. COGS में profit add किया तो you will get sales. Now you take a screenshot. Now this is correct screenshot. WIP वर्क इन प्रोग्रेस रे कितनी बार पूछ रही है मुस्कान? वर्क इन प्रोग्रेस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है समझ में आना चाहिए ना बेटा, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने। डोंट मिस टुडेज सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट रिवाइज इट, इफ यू डोंट राइट इट इन 100 पेजेस बुक, तो लास्ट में बड़ी दिक्कत आने वाली है। चलो याद हो गया क्या सबको? सीओजीएस में प्रॉफिट ऐड किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। किया ना रे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? कौन बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड नहीं किया? यस बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स रुहानी। Revenue from operation is like for professional people, they do not, I do not have inventory. No, I'm not carrying any inventory. I'm giving service. So service industry वाले do not have inventory. This is for manufacturer and trader. I'm कौन से इंडस्ट्री में आता हूं मैं? I'm providing service. Chartered accountancy service. ठीक છે? चलो नेक्स्ट वन। बिफोर ब्रेक बेटा एक और पॉइंट लॉजिक क्लियर करते हैं। ठीक है चलो एक ब्रेक ले लो। विल मीट एट 12:30, 12:30 को मिलते हैं। सो टिल दैट प्लीज रिकॉल ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। चलो सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली याद कर लो। चलो 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 फास्ट याद कर लो। इनू ब्रेक ले ले।
Beta, till now what we have seen. Chalo, quickly revise this. We have seen inventory valuation, why it is important. Inventory valuation में आपको याद रखना है, it is for the manufacturer and it is for the trader. For manufacturer it will be बेटा raw material, WIP and finished goods. So raw material जो होता है वो consume किया जाता है, WIP is a semi finished goods and finished goods you are going to sell it. So it's very simple. Second one important point for inventory valuation. Inventory valuation का second important point क्या है? तो inventory valuation for interchangeable goods. Interchangeable means one thing you bought it at 1 rupee and second thing you bought it at 1.5. So at what price you are going to record that? So 1.5 or 1 rupee के हिसाब से so that we have to understand it in the inventory valuation. After that, beta, we have seen what is the concept of COGS. COGS की concept हमने देखी. What is नहीं? Second point is what you have to consider in the inventory valuation and what you don't have to consider. सबसे पहले direct material, yes, you will consider it. Direct labor, employee cost, you are going to consider it. Okay. Direct expenses. Direct expenses, yes, you are going to consider it. Factory overhead, no. Factory overhead you don't consider. Then, sorry. Factory overhead you will consider. Administration overhead and selling and distribution overhead is not considered. Sir, please focus. Please focus. COGS. COGS in units, opening stock plus production minus closing stock. But in rupees, opening stock of finished goods plus raw material, consume plus direct wages plus direct expense plus factory overhead minus closing stock of or opening stock of WIP you will add, less closing stock of WIP, less closing stock of finished goods, you will get COGS. COGS. Office copy बन गया. Next. For trader. For trader. For trader. ट्रेडर के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू फॉर ट्रेडर. अभी ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड COGS logically. Logically, don't write this. This is only for your concept clarity. Opening stock plus purchases plus wages plus direct expenses by sales and by closing stock. Check करो. GP. So opening plus purchase plus wages plus direct expense minus closing is equal to, yes बेटा ये क्या होगा, is equal to COGS. ठीक है, आगे. Okay, so this is a logic. Sales minus GP, opening plus purchase plus wages plus direct expense minus closing stock. हो गया बेटा. ठीक है. Now, calculation of cost of raw material, WIP and finished goods. So how to calculate this? Raw material. Remember, for raw material, we are, please focus करो अभी, पूरा focus करो. चलो, everyone. Now focus बेटा. Everyone is ready. चलो चलो चलो, full focus चाहिए मुझे. ओके, पूरा फोकस है. एवरीवन रेडी बेटा? सबका ध्यान है मेरे ऊपर. यस, 100% फोकस.
क्योंकि नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जो आपको रिटेन करना है. यू हैव टू रिटेन दैट. रॉ मटेरियल is always consumed. For manufacturer, raw material is consumed. Finished goods and WIP is produced. See the word. And then finished goods is sold. Produce होके sold किया जाएगा. This is in manufacturing account. And this is for trader. Okay. So for manufacturer, चलो. So इधर मैं लिखता हूं for, you can take a screenshot afterwards. Manufacturer. For manufacturer. RM. RM means raw material. What is the word? Raw material consumed. See the word. WIP produced. And finished goods sold. Okay? Finished goods is sold for manufacture. So number 1, number 2, number 3. So how to calculate raw material consumed? Number 1. It's very simple. Opening stock of raw material plus purchases. See, purchases minus closing stock of raw material. Raw material consumed. Opening plus purchase minus closing is consumed. So raw material का फॉर्मूला क्या है? Opening plus purchase minus closing is consumed. So it's a balancing figure. So consumption का logic. What is the logic, beta? Raw material stock to opening to purchase by consume by closing. So by consume is a balancing figure. Raw material consume, opening plus purchase minus closing is consumed. Okay? चलो स्क्रीनशॉट लो. सो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा? कंजम्पशन का फॉर्मूला, यस, दिस इज योर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट. रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड. Yes, every one of you will write it in the comment section now. Everyone will write it in comment section. चलो comment section में लिखो फटाफट. चलो 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 फास्ट लिखो. Formula for consumption: opening stock of raw material plus purchase minus closing stock. Write down, write down, write down. Very, very important. लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. चलो जल्दी लिखो. कमेंट्स दो, कमेंट्स दो. कमेंट सेक्शन में लिखते रहो. यस, चलो. हाँ बेटा, अब भी नहीं लिखना है. In comment section you have to write this. Don't write it in 100 pages book now. You will note down all this in 100 pages book afterwards. Don't take it now. चलो, second one. WIP
प्रोडक्शन, WIP प्रोडक्शन का फॉर्मूला टू ओपनिंग WIP, सी WIP to opening WIP. Okay. So how to calculate production? To raw material consume, because in production we will consider this consumption. Then direct wages to direct expenses to factory overheads by production of finished goods, and whatever not produced, it will be closing WIP. So how to calculate this? So production is equal to opening WIP plus raw material consumed plus direct wages plus direct expense plus factory overheads. We won't consider administration overhead and selling and distribution overhead. Okay. So this is how you will calculate production ka formula. So this is the production ka formula. Okay. Production, opening, consumption, wages, expense, factory overhead, closing WIP, production. So production का formula क्या होगा? Opening plus consumption plus wages plus direct expense plus factory overhead minus closing. चलो. So take a screenshot. Take a screenshot. WIP over. So you understood WIP का formula? Write down in comment section. चलो सब लोग comment section में लिखो, type करो. Type it in comment section फटाफट. Formula. चलो WIP का formula type करो. Very good. WIP produce is equal to. These are very important formula. In yes, many students, they are not getting this. Why this formula? I told you logic also. Logic of this formula, I told you. Yes. Yes, record karo, type karo. Everyone. No one will live up to 115. 1:15 तक कोई भी क्लास लिव नहीं करेगा. Those who want to become CA. I know your patience are 100%. You are giving your best. Yes, beta, your answers are visible. Everyone is writing in comment section. Make sure you will watch all sessions through BOS app. If possible, give feedback forms to ICI Board of Studies. Your feedbacks are very important for continuing this activity. Every time while watching session, after every 4-5 days, please give feedbacks. And you have authority to choose faculties. Your suggestions are always considered by ICI. Yes. Very good. Suppose, beta, these concepts are very, very tricky. But if you are getting these concepts, it means you are focusing 100%. Your focus is there 100%.
and I'm very happy that every one of you now gives answer and logics also. Logics develop करना ये बहुत जरूरी है. If you don't read your 100 pages book continuous basis पे, तो बेटा remember you are going to forget everything what you learn. So it's always better that you must read your 100 pages book on daily basis. Daily basis बेटा 15 मिनट रोज पढ़ना है. जैसे हमारे मंत्र होते हैं ना, हम लोग देखो हमारे में एक कहावत है, एक सामायिक करके होता है. सामायिक मतलब एक जगह पे 1.5 घंटा बैठना रहता है, 45 मिनट्स. तो 45 मिनट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास होती है. तो वहां पे हम लोग भगवान के पूरे मंत्र बोलते हैं. तो वैसे ये आपको 15 मिनट रोज लेके बैठना है. योर 100 पेजेस बुक डेली बेसिस पे रीड इट फ्रॉम स्क्रैच 1 टू लास्ट पेज. डेली रीड करो और ये आपको सर्वाइव करेगी इन यूर सी एग्जाम. 100% एश्योरेंस. लिख लो आज. क्विज नहीं बेटा, क्विज नहीं अभी नहीं बेटा. जिया क्विज अभी नहीं बेटा. ठीक है. नंबर 3 finished goods. COGS. Actually COGS we have already written. So this is production. So this is how you are going to record it. So finished goods. Now see, finished goods. Beta, I really don't know, beta Sumit. To opening stock, if you are not finished your 100 pages book from one first day, now you know backlog कितना difficult है. See, मैं कभी भी backlog नहीं होने देता था मेरे classes में. One thing I always made sure कि I never missed my session, a single session. ठीक है. ठीक भी मुझे समझ में नहीं आता था, वो बात अलग है, बट मेरी नोटबुक बहुत अच्छे से रहती थी. मेरी फैकल्टी सिर्फ खुद ही बोलती थी, खुद ही लिखती थी. यहाँ पे तो क्विज होती है, सब कुछ होता है, अच्छी फैकल्टीज मिल रही है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को. बट यू हैव टू सिट फॉर 2.5 hours रेगुलर बेसिस पे. इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस टू सिट ऑन वन प्लेस फॉर 2 hours, यू आर नॉट सीए स्टूडेंट. ये याद रखो. यस, चलिए. टू ओपनिंग स्टॉक, टू प्रोडक्शन, by COGS and by closing stock of finished goods. So see, COGS is of finished goods, opening stock plus production. Production मतलब ऊपर का पूरा. अपना closing WIP रहेगा ना इधर. Closing WIP, you haven't mentioned that closing WIP is not deducted, sir. Closing WIP कौन माइनस करेगा सर? क्लोजिंग WIP रहेगा ना माइनस करना. ओके. प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एंड प्रोडक्शन को यू कैन सब्स्टिट्यूट बाय दिस लाइन. यस, फॉर COGS. हाँ, एक क्लोजिंग WIP नहीं लिखा था. यस. नाउ टेक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स. WIP एंड फिनिश गुड्स. WIP इज ऑफ प्रोडक्शन, COGS ये रहने वाला है. इजी है. So now everyone is clear बेटा. What is opening stock? What is WIP? What is? Yes, पूरा clear हो गया. हाँ. Now finished goods का बेटा formula: opening stock, production, closing stock, COGS. COGS is equal to opening stock plus production minus closing stock is COGS. Easy. ट्रेडर के लिए क्या होगा? ओपनिंग, परचेस, वेजेस, direct expense, no manufacturing overhead, closing stock and COGS. So for trader only opening plus purchase minus plus wages plus direct expense minus closing. Okay. So for trader. Chalo, take a screenshot for COGS ka. It's a logic for him. I think you have already written.
चलो चलो, तो here we have finished with first part of all manufacturer goods, trader goods. So recall करो. Yes, have quick revision. चलो recall करो बेटा. Yes. चलो अभी एक बार last time. These are very very important points बेटा. So if you answer my 10 questions, your inventory is very clear. So 10 questions. First one. Are you ready for these 10 questions बेटा? You want to read all your concepts? चलो बेटा read कर लो एक बार. I am giving you 3 minutes. 3 minutes के बाद we are going to see these 10 questions. But we have 3 days निश्चय for this chapter. Today is a concept day. Today is a concept day. Next session में we are going to solve questions on this, because today I want to clear your concept of what is cost. Cost is very important in this chapter. What you have to consider? What is raw material? What is WIP? What is finished goods? So today I focus only on this concept. Chalo. If you answer all my 10 questions, then beta this chapter is very easy for you. First thing, inventory for manufacturer and inventory for trader. Tell me, मैन्युफैक्चरर के लिए कौन सी इन्वेंटरी है, ट्रेडर के लिए कौन सी है? टाइप करो फास्ट. मैं भी टाइप करता हूं आपके साथ. Yes. For manufacturer. Yes, beta, for manufacturer. Finished goods, raw material, WIP. Trader के लिए only finished goods. Very good. So if you answer this question, beta, you are on right track. So inventory. What is included? So what is cost? Cost is divided in direct and indirect. Can you bifurcate these expenses? Direct and indirect? Yes. How many expenditure are there in direct and how many expenditure are there in indirect? चलो. And indirect को क्या बुलाते हैं? In accounts भाषा. In accounts language? Yes. Direct. You can use shortcut. Don't use long cut. You can use L. L stands for labor. O stands for overhead. F stands for factory. A stands for administration. S stands for selling and distribution. So you can use shortcuts. Don't write in detail. Yes, beta. Traded inventory भी बोल सकते हैं इधर. Very good. Indirect expenses is called as overheads. Very good. अपूर्वा ने बोल दिया. Very good, बेटा. So direct में क्या आएगा? Raw material, labor, direct expense. Here FOH, AOH, and SNDOH. Second question over.
वेरी गुड. रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, indirect में factory, administration and selling and distribution. Number 3, while doing inventory valuation, which cost are not considered? कौन सी कॉस्ट है जो नहीं कंसिडर की जाती है? नाउ क्वेश्चन इज डिफरेंट. आई एम नॉट आस्किंग यू कंसिडर्ड, आई एम आस्किंग यू नॉट कंसिडर्ड. वेरी गुड बेटा. जिया, मस्त बेटा. Inventory valuation not considered. Office and selling and distribution. Office and selling and distribution. Fourth one. Next. Use word raw material. Raw material के लिए which word is used for raw material? Raw material के लिए which word is used? चलो जल्दी से. For raw material which word is used बेटा? Yes. Very good. Raw material के लिए consumed word is used. And how to calculate this? Opening. Fifth question, how to calculate this? Consume, how to calculate this? Very good, very good, very good. How to calculate? Fast. Opening stock of raw material plus purchase minus closing stock of raw material. Sixth question. Which word is used for WIP? WIP के लिए कौन सा word use होता है? Sixth question. For WIP, which word is used? WIP के लिए कौन सा word use होता है? It's consumed. WIP के लिए consume word use होता है. No. Wrong. जानबूझ के लिखा था. WIP के लिए प्रोडक्शन वर्ड यूज होता है. Is the formula. Formula, waiting for the formula. Formula is opening WIP plus raw material consumed plus direct labor plus direct expense plus factory overhead minus closing WIP. 8 number question. Finished goods के लिए which word is used? Finished goods, which word is used?
Answer is COGS. Answer is COGS, cost of goods sold. And what is the formula? What is the formula? Yes, type it fast. Chalo, chalo, chalo. Type karo fast. What is the formula? Opening finished goods plus production minus closing finished goods is COGS. And what is for trader? Trader ka COGS formula. Trader ka COGS formula. This is the last part. 10 questions. Please listen it carefully while revising it. This last 10 minutes ka session is very, very important. Yes, now you are clear with the concept. Opening stock plus purchases, not consumption. Not consumption, huh? Plus direct labor plus direct expense, no factory overhead, closing stock. Over. So here we have finished with 10 questions. And if you are able to answer all questions, so now tell me it in comment section, how many of you able to answer all these questions? आप में से कितने प्रतिशत लोग थे जो पूरे आंसर बता पाए, पूरे आंसर्स? चलो बताओ फास्ट. सभी आंसर्स बता पाए ऐसे कितने लोग थे? बेटा फटाफट आ जाओ. Okay. Very good, beta. Very good. Yes, every one of you are clear with this concept, beta. Inventory. Yes, study material में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है. Since study material, let's check your study material, beta. We have done it in very detailed way. Yes. Other cost, exclusion. We have done it in very detailed way. Final accounts का भी topic we have covered over here. It's very simple, beta. Tomorrow means on Friday. On Friday, I'm going to explain you different, techniques of inventory. Different techniques of inventory. So अभी मुझे पता है now you are also hungry, and important point now, I don't want to keep any new concept over today. I don't want to introduce any new concept because I will take that periodic versus perpetual. That is the last part. चलो एक class concept लेते हैं. छोटा सा theory है. छोटा सा theory. Is it okay? If everyone is ready, beta, we'll do that. Last part. Inventory system. It's very simple part. It's a theory part. Okay, very simple theory. Last minute. Okay, because very, very important concept you understood today. Expenses, direct raw material के लिए consume, WIP के लिए produce. Though it is not given in the study material, but these words are very important in your future life. Today your base is becomes very strong, not only of accounts but also of costing. Costing में you will need these things. Okay, so inventory cost क्या होती है ना? You understood it today. कि cost मतलब क्या? Now, inventory system. There are two systems, periodic versus perpetual. Periodic means, in simple language, you will take inventory only on 31st March, physical inventory. What you are going to do? Physical inventory you will take. For example, who is doing that? Retailer. मैं हिंदी में भी बताने वाला हूँ, don't worry. But try to understand it in English first. See, periodic. Periodic inventory means what? Suppose now you are a retailer. You are a retailer. I have opening stock of 100 Maggies. कितनी Maggies है मेरे पास? 100 Maggies. Quantity, yeah, quantity wise. Do quantity wise. Valuation we'll do later. First, we have to understand our quantity. I purchased 500 Maggies.
सो मैगी का एग्जांपल अच्छा लगता है ना बच्चों को. हाँ, परचेसेस 500 मैगीज. आई लेफ्ट विथ बेटा 200 मैगीज. सो हाउ मेनी मैगीज आई सोल्ड? I sold 400 Magis. I have taken physical inventory. I have taken physical check. So what I understood? I sold 400 Magis. मैंने कितने मैगी बेचे? 400 Magis मैंने बेचे. Sir, understood the concept. But suppose this is a balancing figure. This is a balancing figure. I have not maintained any account. On 31st March, I physically checked the material inventory. I physically checked the inventory and I got to know that my Magis with me are only 200. बंद करा ना. By closing stock 200, so I sold 400 Magis. Okay? 400 Magis मैंने बेच दिए. But बेटा, here very difficult answer कि sir, suppose if there is a theft, can it be possible that I can find out the theft? No, not at all, because this is very difficult, because I have not maintained any systematic record. And when I maintain systematic record, it is called as perpetual system. Perpetual, where you will record in books. Books में भी record करोगे. बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? ओपनिंग स्टॉक, रिसीट, इशू एंड बैलेंस. ओपनिंग कितना था? 100. रिसीट 500. आई सोल्ड 395. आई इशूड कितना? 395. सो 600 माइनस 395. सो माई बुक स्टॉक कितना आया? 600 माइनस 395, 205. And physical stock is only 200. So there is a discrepancy. Discrepancy matlab difference. Discrepancy. So discrepancy means difference. Okay. So discrepancies means difference. So I got to know there is a difference of 5 Magis. And then after checking it, I understood one of my employee, he ate 5 Magis. उसने खा लिए 5 Maggi. So here we cannot recognize it when we record directly on 31st of March, when we consider physical inventory. And this physical inventory we check, it is called as periodic. So beta, for small amount inventory, it's okay, periodic. But beta, big amount, material amount, big amount inventory, you should record in books. You should record, maintain books, maintain records. What is opening? What is receipt? What is issue? And what is balance? And when you maintain it on paper, it is called as perpetual system. And perpetual system में जो stock मिलेगा, that will be a book stock, and physical stock will be 200. And then we can find out what is the discrepancy over here. चलो एक बार हिंदी में बताता हूं. बेटा, यदि आप लोग एक छोटे रिटेलर हो, आपके पास एज्यूम करते हैं कि मैगीज इज बेटा बहुत छोटी कॉस्ट है. मैंने 100 मैगीज खरीद लिए. 100 मैगीज मेरे पास थे, 500 मैंने खरीद लिए, और मेरे पास अभी 200 मैगीज. अभी मैंने ऐसा रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया कितना बेचा. मुझे अभी ढूंढना है कितना बेचा. तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे बंदे को बोला कि भाई साहब, मेरा जो भी बंदा है स्टोर कीपर, उसको मैंने बोला कि चल मैगीज काउंट कर ले. तो उसने बताया सर 200 मैगीज का स्टॉक है. मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का था, मेरे पास इस साल का बिल भी था, 500 मैगीज मैंने लिए, और 200 मैगीज बचे ये बताया. तो मैंने समझ लूंगा कि 400 मैगीज मैंने बेच दिए. अभी मैं 1-to-1 रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया रे. क्यों नहीं मेंटेन किया? अरे छोटी अमाउंट थी, ठीक है, किसी ने खा भी लिया, क्या फर्क पड़ता है. मैं करोड़ों में इधर बिजनेस कर रहा हूं और एक आध दूसरी मैगी इधर उधर होती है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई. हाँ, पर सपोज मेरे पास मैंने इंजिन्स रखे हुए, गाड़ी के इंजिन्स. अभी गाड़ी का इंजन का स्टॉक बेटा ये कॉस्टली है, तो इंजिन्स में लेके आ रहा हूं. 100 स्टॉक मेरे पास थे, 100 इंजिन्स में लेके आया, ओपनिंग थे, सॉरी, 500 में लेके आया.
395 मैंने इशू किए। अभी बुक में कितने इंजन देखने चाहिए? 295 एज पर, सॉरी 205 एज पर बुक आना चाहिए, पर फिजिकली कितना है? 200। सो यस 200। सो आई अंडरस्टूड चोरी हुआ है। और मुझे बाद में समझ में आया कि 5 इंजन मेरा ही बंदा चुरा के किसी को बेच रहा है। ये फायदा होता है परपेचुअल का, जब आप बुक में रिकॉर्ड करते हो। तो अभी आप मुझे बताओ कि परपेचुअल कहां पे मेंटेन करोगे? कौन सा महंगा होगा? इधर बुक स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, इधर एक अकाउंटेंट लगेगा। ऊपर अकाउंटेंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओनली स्टोर कीपर विल कैरी द एक्टिविटी। सो पीरियोडिक इज चीपर एंड परपेचुअल इज बेटा कॉस्टलियर। पीरियोडिक में यू कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉस। लॉस नहीं, अपने को लगेगा इट्स अ सेल्स, बट परपेचुअल में यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द सेल क्वांटिटी, व्हाट इज सोल्ड क्वांटिटी, एंड व्हाट इज बेटा चोरी की हुई क्वांटिटी, विच इज एबनॉर्मल लॉस। yes, it's possible. So check the difference. So periodic, who maintain details? You only tell me who is maintaining details, which one is in detail. yes, ठीक है। कौन सा मेंटेनिंग है? नो इन्वेंटरी डिटेल्स सर, नो डिटेल्स, नो records. And where is data? Yes, here you maintain daily records perpetual में। Inventory is recorded at the end, वहां पे at the end। Here daily, regularly, periodically हम लोग इधर इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। Cost, which is costlier and which is cheaper? Simple and cheaper, periodic. And here costlier છે। Yes, periodic. Missing inventory, sir, missing inventory sold. We do not have any missing inventory. Consider to be a part of sale, IMP, missing. Okay, and here it's a loss. We can find out normal or abnormal loss. It is maintained at low price retailers. ठीक है, गया तो गया। High price retailers, manufacturers, they maintain it. Balancing figure, वहां पे sales, balancing figure sold. Here normal or abnormal loss, sale नहीं, loss। Okay, easy। चलो, this is 4 mark question। Take a screenshot sir, take a screenshot। आप खड़े हो जाइए यहाँ बाजू में, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। राइट डाउन इन 100 पेजेस बुक में, आज के आज हम लोग इसको लिखेंगे। यस, प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू राइट इट टुडे इटसेल्फ। मजा आया, वेरी इजी था। वेरी वेरी इजी सर। आज का सेशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेशन था। आज हम लोगों ने पूरा पढ़ाई किया डिटेल में। यदि सभी कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में समझ में आई है तो मुझे बता दो, और आप आज आपके लाइक्स जो है वो मुझे बता देंगे हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। आपके जितने भी स्टूडेंट्स ने पूरा समझ गए वो लोग लाइक बटन प्रेस करेंगे। सो आई विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड 100%। यस, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। नवीन बोल रहा है आपको सल्यूट है, अमेजिंग सेशन सर। कोमल बोल रही है, स्नेहा मुझे प्रॉमिस कर रही है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है मोहम्मद? यस, एबनॉर्मल लॉस के लिए you have to wait for one session. In next session I will explain you what is normal and abnormal. So today many new words you understood. Raw material ke consume, WIP produce, finished goods sold, how to calculate inventory, what are the costs, what cost to be considered, what cost not to be considered. So today you understood it in logical way. What is inventory for manufacturer, for retailer? Next session we have to understand system, at what price we are going to record, because one more concept is there, net realizable value. And today we understood what is a periodic, how small retailer will maintain his books of accounts, how big retailers or high price retailers or manufacturers, how they are going to record your inventory. That you understood it today. In next session very very इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट सेशन भी मिस मत करना। आज का सेशन समझाए तो हमारे लाइक बटन मुझे बता देंगे हाउ मेनी ऑफ यू
have clarity over this chapter. Okay, chalo, thank you, good day, take care, bye bye.